मुझे पढ़ना लिखना है, इल्म की राह पर हमको यूं ही चलना है। I love the educators, I love the educators, I love the educators. Assalamu alaikum grade 6 students, hope you are doing well. Today we will read the last lesson of unit 1. The name of this is My House. Actually it is a poem. And we will read page 23, 24 and 25. Bring your textbooks and open page number 23. This is the main picture of the lesson, page number 23, that we are going to read. You can see in this picture there is a family, a house. So this poetry's name is My House. Let's read. I have built my house without sand, without water. मैंने अपना घर बनाया है बगैर रेत, बगैर पानी के. My mother's heart forms a great wall. मेरी माँ का दिल तश्कील देता है एक मजबूत दीवार. My father's arms the floor and the roof. मेरे बाप के बाजू बनाते हैं फर्श और छत. My sister's laughter the doors and the windows. मेरी बहन की हंसी बनाते हैं घर के दरवाजे और खिड़कियाँ. My brother's eyes light up the house. मेरे भाई की आंखें घर में रोशनी करती हैं या घर को रोशन करती हैं. My home feels good. मेरा घर अच्छा लगता है. My home is sweet. मेरा घर प्यारा है. Students, in this lesson the poetess is explaining that which thing makes a house a home. कौन सी चीज़ एक मकान को घर बनाती है. जो चीज़ एक मकान को घर बनाती है वो चीज़ है आपकी ख़ानदान, आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपके फादर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और वही एक घर है जिसके अंदर इन सब की मोहब्बत और इन सब की हंसी गूंजती है, उसे ही घर कहते हैं. इसी तरह से मकान से घर बनता है. Now that is the poetry. Now we will move towards page number 24. On page number 24 there is written, what is difference between house and home? A house is something you can touch and see. It is building itself. एक घर होता है ऐसी चीज़, एक मकान एक्चुअली ऐसी चीज़ है जिसको आप हाथ लगा सकें और देख सकें. एक्चुअली वो बिल्डिंग है. And a home is something you can't touch or see. It is center of family, the place to which you belong to. और होम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जज्बाती तौर पर मुंसलिक होते हैं, जो कि आपकी फैमिली लाइफ का मरकज़ है और ऐसी जगह जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं उसे होम कहते हैं. अब आपके लिए एक राइटिंग टास्क दिया गया है. यू हैव टू कॉपी आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फिलिंग इन द गैप्स विद करेक्ट वर्ड. नंबर 1, द house is very old and is falling down. You will write in blank number 1, house. Number 2, at home we always get up at 6 o'clock. Number 3, I must go home now, said Tahira. I will be in trouble if I'm late. 4, the window panes in the house were made of beautiful colored glass. Number 5, the house is ugly but we are happy and feel at home in it. Number 6, get out of my house, Hanif shouted at the thief. You will fill these 6 blanks in your textbook with pencil. I hope you understood what is difference between house and home. Now below this exercise there is an exercise which is discussion exercise actually. Here is a meaning. A saying is a concise phrase or sentence which contains a general truth. Another word for saying is a maxim or an adage. सो कहावत जिसको कहा जाता है, एक फ़िक्रा होता है, मुख्तसर सा या जुमला होता है जिसके अंदर एक सच्चाई छुपी हुई होती है. आपकी बुक में पेज नंबर 25 पे कुछ 4 फ्रेजेस दिए गए हैं जिनको सेइंग्स भी कहा जाता है, मैगजिम भी कहते हैं, एडिज भी कहा जाता है. ये तीनों नेम एक ही चीज़ के हैं. नंबर 1 इज़ ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट. नंबर 2, होम इज़ वेयर द हार्ट इज़.
home sweet home. Number 4, there is no place like home. So you should memorize these, and also you will read these. These are present on page number 25. Now students, there is also exercise in last, that is test yourself. The first checklist one, this is spelling test. You have to just learn these spellings and practice, or you say to any person at your home, they will listen these all spellings from you. Now at the checklist number 2, at right side, this is, you have to test your vocabulary. These are 10 words that we have learnt in this unit. So these 10 words, they have asked us that what these words mean. So you know already what these mean, but I have again written for you. You will also write these all meanings in your textbook. That's the end of unit number 1. And what was the name of unit 1? Unit 1's name was Where We Live Now. We have learned total 5 lessons in this unit. Inshallah, in next class we will start unit number 2, which is present on page number 26. And the name of unit 2 is the C, that we will learn in next class. Till that, Allah Hafiz.